welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. आइए देखते हैं बॉलीवुड की मोस्ट फेमस होली पार्टीज. सेलेब्स की किस फेक पिक को लेकर नेटिजन्स हुए शॉक. कौन से हैं वो टीवी सेलेब्स जिन्होंने फॉर पब्लिसिटी की शादी. बॉलीवुड की मशहूर होली पार्टीज. जब शाहरुख खान पहुंचे बिग बी की होली पार्टी में, बिग बी को याद आई आरके स्टूडियो की होली पार्टी. ईशा अंबानी की होली पार्टी में पहुंचा था पूरा बॉलीवुड. शबाना आजमी और जावेद अख्तर की अनफॉरगेटेबल होली पार्टीज. बॉलीवुड हमेशा से ही अपनी होली पार्टीज को लेकर मशहूर रहा है. एक समय था जब जमकर बॉलीवुड में रंग और गुलाल उड़ाया जाता था. आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ उन मशहूर होली पार्टीज के बारे में बताएंगे जो कभी भुलाई नहीं जा सकती. शुरुआत आरके स्टूडियोज की होली पार्टी से. आरके स्टूडियोज में होली का जश्न जमकर होता था. बीते दौर के सभी स्टार्स आरके स्टूडियोज होली सेलिब्रेट करने जाते थे. जरा इन तस्वीरों को देखिए जिनमें वेटरन एक्टर्स होली सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं. आरके स्टूडियोज की होली कुछ इस तरह की थी कि आज भी न केवल आम लोग बल्कि स्टार्स भी उसे याद करते हैं. बिग बी ने आरके स्टूडियोज की होली को याद करते हुए लिखा था, होली एट आरके स्टूडियोज द बेस्ट. राज कपूर जी, शम्मी कपूर जी. यही नहीं, एक फोटो कोलाज को शेयर करते हुए ही ऑल्सो रोट, The days of past holies with Abhishek and Jaya at Pratiksha, with Raj ji, Shami ji, Jitendra, Shatrughan at RK Studios, the best Holi. वैसे सिर्फ बिग बी नहीं, जब रणधीर कपूर भी कपिल शर्मा के शो पे पहुंचे थे, तब उन्होंने भी ये बताया था कि आरके स्टूडियो की होली कितनी ग्रैंड होती थी. वैसे आरके स्टूडियो की तरह शबाना आजमी और जावेद अख्तर की होली पार्टी भी बॉलीवुड में बहुत फेमस है. हालांकि लास्ट ईयर द पेयर हैड टू कैंसिल इट. Sharing these old photos, Shabana Azmi wrote, "From Holi last year at Janki Kutir, a tradition started by Kaifi and Shaukat. सबको होली मुबारक, लेकिन इस साल नहीं मना रहे हैं." बॉलीवुड में होली पार्टीज का क्रेज कुछ इस तरह का था कि बिग बी ने भी होली पार्टी होस्ट की थी और उनकी इस ग्रैंड पार्टी में किंग खान भी पहुंचे थे. दोनों मेगा स्टार्स की ये होली पिक्चर आज भी फेमस है. वहीं किंग खान और गौरी खान की फर्स्ट होली पार्टी को लोग आज भी याद करते हैं. इन पिक्चर्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहरुख खान ने अपनी पहली होली पार्टी को कैसे यादगार बना दिया था. हालांकि करीब 2 साल पहले बॉलीवुड की फेमस होली पार्टीज की लिस्ट में ईशा अंबानी की होली पार्टी भी शामिल हुई. प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, विकी कौशल, कटरीना कैफ, राजकुमार राव, जैकलीन फर्नांडिस and many more celebs were seen at the bash. इस पार्टी से आई होली पिक्चर्स से ये समझा जा सकता है कि यहाँ बी टाउन सेलेब्स ने कितना मजा किया था. Well, we wish कि आप भी होली पर अपने near and dear ones के साथ जमकर मजे करें. Happy Holi! क्या आमिर खान और फातिमा सना शेख की हुई थी शादी? क्या है सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की इस पिक्चर की हकीकत? शहनाज गिल की मांग में सिंदूर क्या सिद्धार्थ शुक्ला ने भरा था? सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ऐसी पिक्चर्स आती हैं जो लोगों को चौंका देती हैं. लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ये आखिर हुआ कब. और आज आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी पूछ सकते हैं, क्या ये सच है? आमिर खान फातिमा सना शेख.
आमिर खान और किरण राव के सेपरेशन से पहले कई बार रूमर्स आए थे कि आमिर खान और उनकी दंगल को-स्टार फातिमा सना शेख के बीच कुछ चल रहा है। और इसी बीच किरण राव से जैसे आमिर खान ने सेपरेशन की अनाउंसमेंट की, ये मॉफ्ड पिक्चर हर जगह वायरल हो गई विद द टैग मिस्टर एंड मिसेस। लेकिन आपको बता दें, ये पिक्चर पूरी तरह से फेक थी और फातिमा सना शेख के फेस को किरण राव के फेस पर लगाकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा का नाम एक दूसरे से कभी नहीं जोड़ा गया, लेकिन जब उनकी फिल्म्स रिलीज होने के बाद इन दोनों की शादी की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा, तो सबको लगा क्या सलमान खान ने शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को बना लिया है अपनी वाइफ। और इस पिक्चर को देखकर सोनाक्षी सिन्हा खुद हैरान रह गई थी और उन्होंने कहा था, Are you so dumb that you can't tell the difference between a real and a morphed picture? शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला। शहनाज गिल और लेट सिद्धार्थ शुक्ला रिलेशनशिप में थे, ये किसी से नहीं छिपा था। लेकिन जब शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की ये पिक्चर सामने आई तो सब पूछने लगे कहीं इन दोनों ने चुपचाप शादी तो नहीं कर ली। लेकिन कुछ ही समय बाद ये साफ हो गया कि इस पिक्चर में शहनाज गिल के सर पर नजर आ रहा सिंदूर था फोटोशॉप का कमाल। ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन रियल लाइफ में हैं एक दूसरे के पार्टनर्स, लेकिन फिर भी जब एक दिन अचानक उनकी ये पिक्चर सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने ये मान लिया कि ये पिक्चर इनकी प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी की है। लेकिन अब जूनियर बच्चन नहीं चाहते थे कि उनके फैंस हों कंफ्यूज और उन्होंने तुरंत कहा कि ये पिक्चर है फेक। कैटरीना कैफ, विकी कौशल। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर हर जगह इस कदर बज़ बना हुआ था कि इनकी शादी की हर एक झलक के लिए हर कोई बेकरार था और इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर इन कुछ फेक पिक्चर्स को वायरल कर दिया गया और लोगों को लगा कि ये सच है। लेकिन फिर जब इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स सामने आई तब जाकर लोगों को रियलाइज हुआ ये पिक्चर्स थी मॉफ्ड। सोशल मीडिया पर स्टार्स की पर्सनल लाइफ को लेकर फैंस इतने इंटरेस्टेड रहते हैं कि कभी-कभी मॉफ्ड और फोटोशॉप की गई पिक्चर्स को सच मान लेते हैं और इसे लेकर खड़ा हो जाता है बड़ा कंफ्यूजन। क्या टीवी स्टार्स के लिए फेक शादी अब बन गया है पब्लिसिटी स्टंट? क्या सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए टीवी स्टार्स करते हैं शादी का ड्रामा? टीवी स्टार्स की नौटंकी शादी और पब्लिसिटी स्टंट का पूरा सच। टीवी स्टार्स के फैंस उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा रहते हैं क्यूरियस और इसी क्यूरियोसिटी और फैन फॉलोइंग का अक्सर उठाते हैं कुछ सेलिब्रिटीज फायदा और फैंस को झूठी शादी का देते हैं झांसा। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे टीवी सेलिब्रिटीज जिन्होंने टीवी पर शादी की सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। शहनाज गिल। शहनाज गिल ने बिग बॉस के बाद एक मैरिज बेस्ड रियलिटी शो मुझसे शादी करोगी में एंटर करके सबको चौंका दिया था। सबको लगा शहनाज गिल इस शो के विनर से शादी करेंगी। इस शो ने खूब पॉपुलैरिटी पाई, लेकिन जब शो का फिनाले हुआ तो शहनाज गिल ने हर किसी से शादी करने से इनकार कर दिया। नेहा कक्कर। टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल के मेकर्स ने भी अपने शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए शो के होस्ट आदित्य नारायण और नेहा कक्कर की शादी का ड्रामा किया। इस शो के फैंस को लगा कि एक रियलिटी शो पर आदित्य नारायण और नेहा कक्कर शादी करेंगे, लेकिन बाद में इन दोनों ही लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी को बढ़ाने का था फंडा। राखी सावंत। राखी सावंत ने धूमधाम से टेलीविजन पर किया अपना स्वयंवर और एनआरआई इलेश परूजनवाला से शो के एंड में शादी भी की। लेकिन इस शो के खत्म होने के कुछ ही समय बाद फिर राखी सावंत ने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। रतन राजपूत। टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत ने भी अपना स्वयंवर किया ऑन टेलीविजन और शो के एंड में दिल्ली बेस्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी भी कर ली। लेकिन अनएक्सपेक्टेड लाइंस ये शादी भी शो खत्म होने के कुछ ही समय बाद टूट गई। सारा खान। टीवी एक्ट्रेस सारा खान और उनके बॉयफ्रेंड अली मर्चेंट ने बिग बॉस 4 के दौरान पूरी दुनिया के सामने शादी कर ली थी और सबको लगा सारा खान और अली मर्चेंट का ये डिसीजन है पक्का। लेकिन जब ये शो खत्म हुआ तो पता चला इन्हें 50 लाख रुपए मिले थे इस पूरे ड्रामा के लिए
और शो खत्म होने के बाद ये दोनों अलग हो गए। साफ है इन टीवी एक्टर्स ने पब्लिसिटी और पैसे के लिए अपने फैंस के इमोशंस की भी कदर नहीं की। शायद यही वजह है कि अब जब कभी टीवी रियलिटी शो पर किसी एक्टर की शादी की बात होती है तो फैंस उस पर भरोसा नहीं कर पाते। शो पूजा हेगड़े ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is extremely comfortable in her skin. She's confident, she's talented and she's here to take over. And I'm talking about the beautiful Pooja Hegde. That sounds amazing. Can you always introduce me? I really like this introduction and it was so like sassy. It is, right? I'm sure for you that is where you want to see as well, right? Like language not being a bar and your films reaching everywhere and kind of connecting your fans to you. Of course. I think that not only about working in the West, but I'm saying that even our films are tracking so well there. It's so it's such a strange experience. Like I was walking down Oxford Street and in London, and you know Oxford Street is like crazy, right? And I'm walking with my mom, and suddenly I heard Pooja, Pooja, and I'm just like, it just sounded so strange. So I stopped. I could hear it, and I turned back, and they were foreigners, and they were just like, oh my god, and I'm like, how do you guys know me? And she's like, we watch all your films and so Bollywood and like, and I'm just like, wow, that's amazing reach. Yeah. In fact, my cousin lives in Manhattan and she was stopped on the road by a foreigner and he said, aren't you Pooja Hegde's sister? I've seen you on her Instagram. Oh my god. And she was just like, yeah. And he's like, and then, you know, she FaceTimed me and I spoke to him. And he knew all my Telugu films by like properly you know, the pronunciation was perfect. And I'm like, wow, like it's really reaching across to people. Like Ala Vaikantapura Mula. Very good, well done. She's been a Miss India and she'll I'm sure continue always to be one. But I remember that you tried it for the second time, that's when it really clicked. Right. It starts from that and I feel like it adds to who you are as a person. Of course. Not giving up, because in the industry, like we were discussing earlier as well, you've been someone who didn't have anyone here completely. Right. So I'm sure you've seen those moments. Of and course. I'm sure they added to who you are. Oh, 100%, because, you know, Rudrani, it's not been like, my career has never been like I did that one film and then boom, and then rest has just been like, you know, blessed are the people who have. But I feel like I started a film, then for 1 year I didn't have work, then work started coming, then I did Mohenjo-daro, then 2 years of my life went in shooting Mohenjo-daro, and then, you know, after that the film didn't really do as well as we expected it to. So it's been a roller coaster ride, but then coming back to doing Telugu, doing that really well, and then it's been, you know, a successful journey. But of course, everything just adds up to me, to my my life in terms of that. Now that I have also seen that aspect of my life, having seen failure, I really don't take success so much, like so seriously, because then what's going to happen when failure happens? Because it's bound to, right? Yeah, it's the natural process of life. Absolutely. And I don't want to take it so seriously. And I think that it's made me stronger. Today, when, you know, people ask me, how are you shooting 4 films back to back, and when do you have the time for yourself or anything? I'm like, trust me, I've had times where I didn't have work and I know what that feels like. So I'm so grateful to be working and doing what I'm doing. I love being on set and I enjoy it. So I think it's obviously been a culmination of my past experiences and, you know, the future, of course. I feel actors, and particularly women, get so many advices when they are specifically entering the industry. Of course. And I feel some you have to navigate through and know what is right for you. I feel you have managed to do that. You have your distinct personality, you know, and you continue to be real.
But I don't think that is what you're told, right? You know, all the time. I remember when one of my films, DJ released, people were like, oh my God, she's just, you know, she's so glamorous. And like, she's only good for like glamour. And just before that, I had done a film called Mukunda where I was a proper village girl. And at that time, I remember people saying, ki, she's good for these de-glam roles, but she can't do glam. But I love it. I love challenging people. I love making them look at me in a new light. I think it's a great experiment. My next film is Acharya, where I play a village girl, which is like proper tu choti wali, you know, village girl. And that's exciting for me. I try and filter constructive criticism from just plain harsh criticism. Like I feel some people like to complain and, you know, like to give you advice just because they want to, but like there are some people who say, you know, you could be better here, you could do this, and I like constructive criticism. So I take everything with, I filter a lot of the comments coming towards me, and I follow my gut. I've always followed my gut. It's touchwood led me to a great place in my life. So that's how I manage it. You as a person, I think, have taken your stance where it's required, you know, particularly when it comes to owning the skin tone that you have. You know, and being comfortable in the body that you have and the skin that you are in. And I also feel like you've also said that, you know, I'm sure you wouldn't want to only be a part of films that objectify women to a certain lens of it. Why that is so important for you, of course, and also reflective of, I think, your ideals. You know, it's not always been the case where I've always accepted it. You know, in terms of like, it's been a journey for me. Yeah. You know, whether it's, you know, my lovely chocolate brown skin tone. Gorgeous. It's been a process of acceptance, I would say, because maybe when you start, you come in, you kind of want to fit in, and you kind of, you know, there's a set beauty idea or in our minds, and I've accepted it, and I think travel helped me do that, because when I travel to Europe, and they're just like, oh my God, you have such gorgeous skin tone, and you know, they think I'm Spanish sometimes, Latina, and like, and it kind of like, and I see them go tan themselves, and I'm just like, wow, this is like naturally given to me, you know, I haven't appreciated it. And I think what made me realize like is that I don't need to fit in, like I'm okay to stand out. Absolutely. You know, Well in a lot of ways, because if I try to be like everybody else, then I lose who is Pooja Hegde in the process of doing that. And if I can inspire Rudrani, even just one girl, to be like, but Pooja Hegde, you know, looks so fabulous doing what she is and being who she is, and they connect with me in some way. I feel like even if one girl does that, I'm very happy with it, you know. So it's really been a journey. It's really been when you realize that you have a power to influence, you have a power to maybe question people or change the way they think about themselves in terms of feeling better about themselves. I feel like it's great to do it, you know, and it's not really been like ki, I want to send a message across to people. It's not been that. It's just been like, I need to learn how to accept myself. Wonderful. And it's been more a journey of that than the other way around. No, sure. And I feel, but the other thing is just a byproduct, right? When you Correct. accept who you are. It's not easy out here to make your own space and to be successful doing that. Because it predominantly is slightly patriarchal still. And the movies do reflect that. You know, your characters are women who are interesting. And that is not always the case. I've been, I feel like whatever character I do, I try to make sure I talk about her through the lens of being strong, right? I'm okay to play women also who aren't strong as yet, but I like to show a character graph, right? So there's this film I did, Gatala Konda Ganesh, where I play a girl who's very suppressed under her father's, you know, like how he wants her to live her life. But I like that she was still so strong-headed about her life, and kind of there was a graph. So I try and bring that in whatever way I can, but I have a long way to go. I really want to do films that inspire women, only because growing up,
feel like we didn't really have too many, you know, films where, like, I loved seeing Hema Malini and Sita or Geeta, you know, fight the bad guys, you know. She saves the boys, and or Gal Gadot saving Batman, and you know what I mean? Yeah, of like, course. all these things are really inspiring, and if I can do that, that's just so amazing. But so yeah, let's hope so.